वेलकम्स टू बीरेन्स एकेडमी। देखो ये वीडियो में आम देखा करेन्ट अफेयर 2021-22 डिफेन्स रे मोस्ट इंपोर्टाट 50 क्वेश्चन अच्छी जोटा कि आप एग्जाम बहुत इंपोर्टाट हम। जदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे जहाँफल कि एभला वीडियो नोटिफिकेशन हम आगे कि आगामी एग्जाम प्रिपेरेसन आपको हेल्प हम। तो चलन देखा कौन क्वेश्चन आज प्रथम क्वेश्चन आपको देखा जाऊ टे छोट करदे। हाँ प्रथम क्वेश्चन देखूँ Where has the ex-Dashlik exercise between the armies of India and Uzbekistan started? कौटी आपंकर जो एक्स डस्टलिक एक्सरसाइज होता इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान भितर कौ जगह देखते कौ जगह हे। सो राइट आंसर आप देखिए ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर आपंकर ये जगह कौन है इंडिया उज्बेकिस्तान एक्सरसाइज जोटा कि आपंकर थर्ड एडिशन थिला जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कॉल्ड एक्स डस्टलिक बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान आर्मी विल बिगिन फ्रॉम 22 to 31 मार्च है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देला इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन द जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज लाइमटा 2022 विथ व्हिच कंट्री कौ कंट्री सहित जो इंडियन आर्मी जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज जोटा कि लाइमटा 2022 कौटा ना आपंकर ऑप्शन नंबर सी हो यार करेक्ट आंसर। सो द 9th एडिशन ये जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड सेल्स डिफेंस फोर्स विल हेल्ड एट सेल्स डिफेंस आर्मी। देखिए नेम द कार्गो वेसल व्हिच हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वेसल ओवर टू सेल ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र है कि कौटा सब कार्गो वेसल जे कि रन करने को जाऊँ कौन आपणकर ब्रह्मपुत्र रिवर रे कि ऑप्शन नंबर डी हो एम.वी. राम प्रसाद बिस्मिल है। सो एम.वी. राम प्रसाद बिस्मिल हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वेसल टू सेल ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखो which Indian Navy ship is representing in the country in the SNELEX 2022 को इंडियन नावी शिप ये आपंकर ना देखिए आम ऑप्शन नंबर सी हो यार करेक्ट आंसर। सो इंडियन नावी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय INC क्रिच ए गाइडेड मिसाइल corvette while Sri Navy will be represented by SLC Sorial and advanced offshore patrol vessel। नेक्स्ट देखो इंडियन नावी सक्सेसफुल टेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड रेंज लैंड अटैक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम व्हिच स्टील्थ डिस्ट्रॉयर को स्टील्थ डिस्ट्रॉयर ये होची ऑप्शन नंबर ए INC चेन्नई है ना। द इंडियन नावी सक्सेसफुल टेस्ट फॉर द लॉन्ग रेंज वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम द स्टील्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ INC चेन्नई। देखिए in 2022 CISF observed which edition for Rising Day celebration है। CISF ऑब्जर्व कर एडिशन जे कि आप राइजिंग डे सेलिब्रेशन को लेकिन को एडिशन ना ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर 53 है। द 53rd राइजिंग डे सेलिब्रेशन ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए which of these a name given to the border security force increased surveillance along with along with Pakistan border in Rajasthan। so कोटा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए साड हावा है ना। so the name given to the border security force increased surveillance along with Pakistan border Rajasthan is साड हावा। नेक्स्ट देखिए exercise Dharma Guardian 2022 is a military training exercise of India with which country अपन जो धर्मा गार्डियन अच्छी है कि तार जो एक्सरसाइज है कौ कंट्री इंडिया और कौ कंट्री भितर है ना इंडिया और जापान भितर यहाँ है। थर्ड एडिशन थिला जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज आपनकर धर्मा गार्डियन 2022 बिटवीन इंडिया एंड जापान विल कंडक्टेड एट बेलगावी जोटा बेल्जियम कर्नाटक में है बेलगाम कर्नाटक। नहीं देखो एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 विल बी ऑर्गेनाइज इन व्हिच प्लेस बाय द IAF है ना। आपनकर जो कौटी एक्सरसाइज वायु शक्ति ऑर्गेनाइज्ड हम ना ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर राजस्थान ने वायु शक्ति ये ऑर्गेनाइज्ड हम है। सो इंडियन एयरफोर्स विल कंडक्टेड द एक्सरसाइज वायु शक्ति दैट विल टेक प्लेस एट द पोखरण रेंज इन जैसलमेर। नेक्स्ट देखिए
Which edition of the CII Technology Summit has been hosted by the Confederation of India Industry, New Delhi in partnership with DST? କେଉଁ ଏଡ଼ିସନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ 28th ଏଡ଼ିସନ୍. So Confederation of Indian Industry New Delhi hosted 28th edition of the CAI Technology Summit in partnership with Department of Science and Technology. Next देखो Indian Navy multilateral exercise Milton 2022 is being undertaken in which city? କେଉଁ ସିଟିରେ ହେଉଛି Indian Navy multilateral exercise ମିଲନ କେଉଁ ସିଟିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କେଉଁଠି ନା ବିଶାଖାପାଟନମ ହେଲା. ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା Indian Navy received its final anti-submarine warfare aircraft P-81 from Boeing. How many such anti-submarine warfare aircraft P-81 does the Indian Navy possess now? କେତେଟା ଏମିତି anti-submarine warfare ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଅଛି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଯଦି କୁହାଯିବ ଏଇଟା ନା 12ଟା ଅଛି ହେଲା. So Indian Navy received 12th anti-submarine warfare aircraft PI from the US based airspace company Boeing. Next ଦେଖିବା which country is hosting multilateral exercise Milan 2022 କେଉଁ country ଏଠି host କରୁଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆ host କରୁଛି ହେଲା. So Indian Navy is hosting multilateral exercise called Milan in Andhra Pradesh, Visakhapatnam. Next ଦେଖିବା which regiment unit were honored with the president colors on February 23rd? କେଉଁ ୟୁନିଟ୍କୁ ଅନର୍ କରାଯାଇଛି ଏଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍. So Chief of Army Staff General M.M. Narayan presented the prestigious president colors to fellows of the regiment, 4 battalion of the Pursuit Regiment. Next, which IFZ will participate in the Cobra Warrior exercise? यार Cobra Warrior जो exercise रे कोई जेट एटी participate करुची ना LCA Tejas है ना. So India will be sending 5 indigenous LCA Tejas fighter aircraft to participate in the Cobra Warrior exercise in the United Kingdom. The AC-17 aircraft will also go along with to provide transport support. Allow 17 aircraft जो transport support में. Next कहला अपन को the naval exercise Chiru 2022 was held between 3 countries to enhance their naval cooperation. Which country was not part of the naval drill? କେଉଁ country यार part नुह China, Russia, India, Iran ଯଦି କୁହାଯିବ India यार part ନୁହ ହେଲା. The Russia, Chinese and Iranian Navy undertook naval exercise Chiru 2022 in the Gulf of Oman. Next ଦେଖନ୍ତୁ the joint maritime exercise Paschim Lehar XPL 2022 was conducted by which naval command? କେଉଁ naval command ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଏଟାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇ ଯଦି କୁହାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନା Western Naval Command ହେଲା. So Western Naval Command of the Indian Navy conducted a joint maritime exercise Paschim Lehar XPL 2022 of the West Coast which concluded. देखिए India signed the contract of procure AK 2022 assault rifle from which country and how many rifle have been received by the Indian Armed Force? केतटा rifle एटी रिसीव करछि Indian Armed Force जदि कहजिबा आपनको ना Russia 70,000. So Russia delivered all the contracted 70,000 AK-203 Kalashnikov assault rifles to the Indian Armed Force. Next देखिए the Indian military has inked a contract deal with which country to purchase 84 anti-armor weapon? କେଉଁ कंट्री सहित लिंक करिछि इंडियन आर्मी जदि कहजिबा आपनको कंट्री नाउ इज कौन सोडेन है ना. सो इंडियन आर्म फोर्स हैव साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विथ स्वदेशी डिफेंस कंपनी सब फॉर द सप्लाई ऑफ सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन. देखिए द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स सेलिब्रेटिंग व्हिच एडिशन ऑफ इट्स राइजिंग डे? केଉଁ एडिशन एटी सेलिब्रेट करछि ऑप्शन नंबर सी जो 17th एडिशन. Next, there was an explosion abroad which Indian naval ship explosion हेतला abroad रे को Indian naval ship रे देखिए हमें सेटा जो कोन पर INS रणवीर हला. In a tragic incident there was an explosion of internal compartment on board INS Ranveer at the naval dockyard in Mumbai. Next kala Indian Navy has participated the PASEX exercise with which country? कोउ country सहित PASEX exercise रे Indian Navy participate करथिला ना Russia.
जोटा कि 14 January 2022 at the port of Cochin in the Arabian Sea. The main portable anti-tank guided missile which flight tested was developed in which country? को कंट्री टा डेवलप होता ना इंडिया रे डेवलप होता है ना नहीं देखिया यार पीडीएफ में दे देवी और हेनी which defense organization introduced a light and more climate friendly combat uniform for its personnel on army day को डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जब कह आपको इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी लॉन्च्ड an in-house messaging app. What is the name of the app? जो हाउस मेसेजिंग ऐप से आप ना हो कौन ना सिग्मा ASIGMA is your correct answer. Nazla, which of the Indian Navy ship has decommissioned after 32 years of service at Visakhapatnam, Andhra Pradesh in December 2021? को ना आपनकर INC खुरकुरी है INC खुरकुरी परमानेंट या जो नंबर अच्छी 40 जो पेनेंट नंबर आपनकर 49 फास्ट इंडिजिनियसली बिल्ट मिसाइल कोवेट वाज डिकम्पोज्ड आफ्टर 32 years सर्विस देखिए हु हैज अज्यूम्ड चार्ज एज चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी ये ना आर्मी चीफ जनरल MM नवरत्न ये देखिए प्रेसिडेंट हैज प्रेजेंटेड द president standard to which number missile vessel squadron of the Indian Navy केते नंबर मिसाइल थिला ना 22 नंबर ने देखियो where will the joint military exercise Panex 2021 with BIMSTEC country or held कोठेटा हेतला आपनकर ना पुणे रे हेतला आपनकर जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन सहित इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ए जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज इक्विवेलेंट विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री को कंट्री सहित ना जदि आपन कह मिलिटरी एक्सरसाइज रमडी देइथिले से थिला हाथ मालदीव्स 11th एडिशन एटा होची आपनकर नेदला गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लॉन्चेस व्हिच सर्वे वेसल ऑफ इंडियन नेवी को सर्वे वेसल ना आपनकर संधायक नेदला हाउ मेनी राफेल जेट्स डिड UAE बाय फ्रॉम फ्रांस केतरा राफेल जेट्स UAE फ्रांस टारू बाय करछि ना ऑप्शन नंबर बी हे जो आपनकर 80 है ना फ्रांस एंड UAE had signed a 40 billion euro agreement for 80 राफेल 14 billion euro agreement करछन के 80 राफेल वारप्लेन पाई नेक्स्ट देखिए US military personnel in which country has begun 27th annual corporation afloat readiness of training maritime exercise ये आपनकर बांग्लादेश नावी ने देखिए who has been facilitated with the best actor award in the male category of the 52nd IFFI festival क्या को मिले छेटी ना जितेंद्र जोशी को मिले छे ने देखिए which is the fourth stealth Scorpion class submarine that has been commissioned to the Indian Navy under Project 75 को डाटा है जो ना ऑप्शन नंबर बी INC वेला है ना देखिए the stealth guided missile destroyer INC Visakhapatnam has been manufactured by which organization for the Indian Navy को ऑर्गेनाइजेशन है जो आपनकर माजगन डक शिप बिल्डर लिमिटेड India has flagged off which edition of the scientific expedition to Antarctica in November 2021 को एडिशन ये थिला ना 41 एडिशन ये थिला मैं देखिए which edition of the Indian Thailand coordinated patrol Indo-Thai corporate has conducted in November 2021 in the Andaman Sea को एडिशन एटा है जो ऑप्शन नंबर सी 32nd एडिशन मैं देखला the biennial military training exercise Ek Shakti 2021 is scheduled to held between India and which country को country भीतर होची ना India and France कोठी ना फ्रेजस रे name the
फोर्थ स्क्वाड्रन क्लास सबमरीन रिसीव्ड बाय इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट 7 एबे देखले आईएनसी भेला। नेक्स्ट क्लास द सेंट्रल गवर्नमेंट has appointed Vice Admiral R. Hari Kumar as the next chief of whose defense force? जो आपनकर आर हरि कुमार नेक्स्ट को डिफेन्स फोर्स र चीफ अछंती हेबे ना इंडियन नेवी। नेक्स्ट देखिया Which Indian force squadron participated in the Blue Flag 2021 international exercise? किए ना Mirage 2000। How many Indian soldiers took part in the international exercise Blue Flag 2021? केते इंडियन सोल्जर ने पार्टिसिपेट करते ना 84। Indian Navy stealth frigate has been launched at Yantar shipyard of which country? को country से तो ना रशिया। इसका DRDO test for long range nuclear capable ballistic missile Agni 5 तो न्यू मिसाइल फॉल्स अंडर व्हिच कैटेगरी को कैटेगरी अंडर रे मिसाइल आसु जे आपन को आजो ना ऑप्शन नंबर डी जे कि सरफेस टू सरफेस। नजला नूरी इज एन इंटरनेशनल डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल रॉकेट बाय व्हिच कंट्री? नूरी उटे इंटरनेशनल डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल रॉकेट को कंट्री द्वारा ना साउथ कोरिया। Which space agency is preparing to launch that mission to prevent the collision of Earth with an asteroid? कोटा ऑप्शन नंबर ए हे जो आपनकर नासा हला नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर करछु लॉन्च करियो कोन डबल एस्ट्रॉयड रिडक्शन टेस्ट मिशन। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन फास्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर? आईएनएस विक्रांत। हला द फास्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट विक्रांत set sail for the second sea trial before its planned induction in the Indian Navy by August 2022. Which high-speed expandable aerial target was flight tested by DRDO? कोटा ना अभ्यास है ना अभ्यास। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन। The Indian Army team has won the gold medal at 2021 Cambrian patrol exercise. Which of the following forces represent the Indian Army at the event? इन इवेंट रे किए थी उसको लाइनर आर्मी को ना 5th गोरखा रिफाइल्स फ्रंटियर फोर्स है सो ये आपन मोस्ट इंपोर्टेंट 50 या PDF मिल जो आपको टेलीग्राम रे सो डोंट वरी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।